Mga gerero tayo. Hindi na kayo makakabalik ng munisipyo! Patuhin man tayo ng puti. Hipokrito! Binabae! Bahiran man ang mansa ang ating pangalan. Patayan na kayo! Walang kahit sino ang gigibasa. Pilindeo mo ko? Anong klaseng kaibigan ka? Wala kang utang na loob. Nasaan si Pilar? Kailangan nating umalis dito, mahal. Bakit na si Gustavo? Papatay. Wala na sila sa kwarto. Tignan niyo sila. Sila ka na makalayo. I'm so grateful that you're not my father. And I don't owe you nothing. Everything! Dapat anak ngayon, magdobling ingat ka. Kayo nang bahala. Gagawin natin pinag-uutos ni Mayor. Huwag niyo akong bibiguin. Sigurado ko ngayon, magpaplanuhin sila ang buhay mo. Ako na bahala nila! Ako na kailangan nila! Kinakabahan ako sa magiging resulta ng eleksyon. Paano kung hindi manalo si Tanggol? Nakita naman natin kung gaano kalaki ang suporta ng mga taga-Maynila kay Tanggol. Mahal na mahal siya ng mga tao. Saka siguradong mabuti at mahusay si Tanggol kung sakaling maging mayor siya. At maraming taong makikinabang. Pag manalong mayor si Tanggol, sana naman mabuksan niya na yung mga pasugalan natin. Nang kumita naman tayo ulit. Kung alam ko nga na ipapatapon ni Tanggol yung mga drogang ninakaw natin, binenta na lang sana natin yun. Boss Divina, alam niyo naman ang posisyon ni Tanggol tungkol sa droga. Baka naman mas mainam na ipagpaliban natin yung mga negosyo na yan. Pero Enteng, pinaghirapan nating lahat yun. Hindi mo ba maalala kung tayo mahuli ng mga nadko? Ano itong naririnig ko? Ha? Kaninong droga ang ninakaw ninyo? Kanino? Mas naman. Wala ho. Hinabol kayo na nadko. Hindi ba? Magsalita kayo! Naging kasosyo namin si Miguelito. Pinasahan namin siya ng nakaw na droga, pero Pero muntik kaming maabutan ng mga taga-nadko. Kaya kinakailangan naming tumakas agad. Bakit hindi sinabi sa akin ng Tanggol ito? May umarang sa amin ni Tanggol noon sa pier. Sinangay ang pera at mga droga na nanggaling sa mga kuon. Malaking halaga na wala sa amin. May kinalaman ba kayo dito? wala kaming kinalaman dyan. Hindi ka namin babanggain. Sabi kayo na totoo! Nagsasabi kami ng totoo. Hindi kami magsisinungaling sa'yo. Ramon! 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 Ano? Ramon, si Tanggol! Kailangan mo tulungan si Tanggol! Ano nangyari? Inabos kami ng mga tauhan ng mga gerero. Nahiwalay sa amin si Tanggol. Ano? Wala na ito ang lahat, Ramon. Alam nila kung saan kami dadaan. Ramon, humiwalay sa amin si Tanggol para makatakas kami. Kailangan sundan mo ang anak natin. Kailangan ng tulong ni Tanggol. Franco, ang tamang mga tauhan natin. Lulusubin natin ang mga girero. Pagbabayaran nila lahat ang mga ginawa nila sa anak ko! Ramon, teka muna! Teka muna! Ramon! Lahat ng gerero! Paano si Don Gustavo? Tatay ko! Yung beses na kami pinagtanggaan ng mga girero, hindi na ako papayag ng may matira pang isa sa kanila. Ang mo ang utak mo. Pinagtangkahan ng buhay ng anak mo. Kakampihan mo ko sila. Sige, Ramon! Lusugan mo sila!
Poong Nazareno, sana pakinggan niyo po ako. Iligtas niyo po ang anak ko. Lumalaban siyang mag-isa. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Pareho pong mahalaga sa akin si Ramon. Lalong-lalo na ang anak ko si Tanggol. Kaya na po ang mahala sa kanila. Evan, tumawag ka ng backup. Hindi natin titigilan hanggang di natin papatay. Hayop na Tanggol to. Kailangan namin ng backup. Pumunta na kayo sa tulay. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Sige, salakay tayo! Go, go! Please, witness! Ano nangyari? Mayor, sinasalakay tayo! What the hell is going on? Sino may lakas ng loob sumalakay dito? Si Ramon Montenegro, Kong. Nakahanda ng mga tao mo? Pinakalan ko na ka. Palabas mo ang mga baril. Uber, kuha, kuha! Kuya, let's give Ramon Montenegro the welcome he deserves. Benteng! Palibutan niyo ang buong mansyon! Patayin niyo lahat! Maliban sa mga gerero! Iharap niyo sila sa akin ng buhay! Sige po, Samuel! Proteksyonan niyo ang mansyon. Huwag niyo silang hayaan makapasok. Sige na! Madam, Ano nangyayari? sinasalakay po tayo ng mga Montenegro. Nasa si Miguelito at si Roberto! Sinalubong po ang mga kalaban. Colonel, sinugod po kami dito ng mga Montenegro. Magpadala kayo ng pulis. Ngayon na, ngayon din! Roberto! Lumabas ka dyan sa lungga mo! Ako ang magiging kamatayan mo! Gusto mo patayin tayo? Sige! Magpila tayo sa impyerno! Doon naman! Dami mo talang res, baka! What are you waiting for? Face us already! Ang dami mo satsat! Pagpara! Jason! Cover me!
Dito tayo sa likod. Sa kubat sa likod. What? Ito na yung pagkakataon natin. Tapusin na natin. Tingnan mo na lang. Kailangan mo manalo. Kailangan mo mabuhay. Sige na! Jason! Go! Go! Jason! Let's go! Come on, fire! Pagpapayaran niyo ang pagtabang sa anak ko! Dadaling ko sa inyo ang impyerno! Ah! Ah! Yeah! Boss, may daan dito. Enteng, maghiwa-hiwalay muna tayo. Oo! Tara. Madam, dito lang po tayo. Ano? Hintayin ko na lang na abutan ako dito ni Ramon? Lalabas tayo. Samahan mo. Hindi po pwede, madam. Palalabasin mo ako o sisisantihin kita? Jason, tara! Ma! Jason! May tama ka. Ikaw, ma. Pastor Ramon is here. Si Roberto nasaan? Nag-aasikaso ni Sir Ramon. We need to go now! Jason! Go! Tara, dito tayo! Go, ma. Cover fire! Let's go! Cover fire!
mismo magdadala sa'yo sa hukay! Ana! Patay na yung si Tanggol! Ana! Kunin niyo! Tara na, tumakas na tayo! Na kayong mga girero! Aba, ang Gladius Street! Kinakailangan natin maganda. Sigurado ko lulusong dito ang mga gireno. Pagkahandaan natin sila, Damitan, ang magiging resulta ng eleksyon na magtitikta kung ano ang susunod na mangyari. Base dito sa partial result, 62% si Tanggol, 38% na okay. Hindi po kayo ng 117,000 votes. Malaki po ang posibilidad na kayo ang manalong mayor. Hindi tayo matatalo. Hindi na lang maaagaw ang munisipyo sa atin. Oras na mawala yung kuryente, susugod tayo. Namatay na yung ilaw, tara na! वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने चैनल पर व्यूवर्स वेलकम। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और इस व्लॉग में जो है हम बात करेंगे ये ग्लासेस पर। और ये मेरी ग्लासेस आई परचेज़ न्यू ग्लासेस और ये ग्लासेस चेक करें, बड़ा फ्लेक्सिबल फ्रेम और हर चीज़ बड़ी अच्छी है। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का पर्पस ये था कि आप लोगों को जो है फुल डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना। तो व्यूवर्स वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होगी। छोटा सा व्लॉग होगा 3 से 4 मिनट का। आकिब भाई के लिए वीडियो है, तो आप लोगों ने से रिक्वेस्ट है कि आकिब भाई का चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। व्लॉग बनाने का पर्पस ही ये होता है कि आप लोगों के साथ जो है अपडेट शेयर करते रहना अपनी। तो आई परचेज़ आ न्यू ग्लासेस, ये मेरे वीडियो का टाइटल है, माय फर्स्ट व्लॉग और न्यू व्लॉग है ये। तो ये देखो यार, बड़ा फ्लेक्सिबल फ्रेम है, ये चेक करो आप लोग। सारी चीज़ें छोड़ो, ये चेक करो। ओहो सॉरी, ये चेक करो यार, ये फ्रेम है और बड़ा फ्लेक्सिबल फ्रेम है, ठीक है। ये चेक करो, ये आप चेक कर सकते हो। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल फ्रेम है ये मैंने जो है न्यू परचेज़ की थी। आप लोगों को इसकी जो कॉस्ट है और सारा सीन जो है आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन पर क्लिक करो फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ठीक है। ये काम आप लोगों ने जो है लाजमी से लाजमी कर देना है। मेरे पास एक और भी ग्लासेस पड़ी हैं, मैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। एक ये भी ग्लासेस है, एक ये वाली ग्लासेस है, एक ये वाली ग्लासेस है। ये जो है फ्लेक्सिबल फ्रेम के साथ नहीं है, ये फिक्स्ड फ्रेम के साथ है। ये चेक करो, मैं आप लोगों को बिल्कुल दिखाता हूँ। नहीं, ये भी फ्लेक्सिबल फ्रेम के साथ है, ये देखो। नहीं, ये मेरे ख्याल से फ्लेक्सिबल फ्रेम के साथ नहीं है ये वाली। तो एक ये ब्लैक कलर में है, एक ये ब्राउन कलर में है, दोनों आप लोगों को दिखा देते हैं जी। ये चेक करें जी, एक ये। तो न्यू परचेज़ की थी ग्लासेस और मार्केट से परचेज़ की थी, ठीक है। स्पेशल बनवाई थी क्योंकि ये आई साइज ग्लासेस हैं, तो ये दोनों जो ग्लासेस थी वो बनवाई थी, ठीक है। और 1500 आई थिंक इसमें ये बन गई थी। तो डॉक्टर्स ने जो है रिकमेंड की थी मुझे, डॉक्टर्स रिकमेंडेड मी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो है ये वीडियो पूरी देखनी है। तो यार ये ग्लासेस थी, ठीक है। ये वाली जो है ये थोड़ी सी, इसका जो फ्रेम साइज़ है, फ्रेम साइज़ जो काफ़ी बड़ा है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेम साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और इसका जो ये जो ब्लैक वाली है, इसका जो फ्रेम साइज़ है वो छोटा है, ठीक है।
तो ये चेक करो जी, ये फ्रेम साइज़ जो है वो छोटा है। तो आप लोगों को ये दोनों का डिफरेंस बता रहा था मैं, ये एक फ्रेम साइज़ का बता रहा था, एक फ्रेम दूसरा है, एक फ्रेम जो है दूसरा है। तो इसकी भी कॉस्ट आई थिंक 1100-1200 थी, इसकी जो थी आई थिंक 1500 थी। तो ये इतने में जो थी ये ग्लासेस मुझे पड़ गई थी। तो आप लोगों से यही है कि इसके अलावा भी यार इसमें जो है ग्लास मिरर की इसकी बात कर लें, क्योंकि कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो होगी ये, और हमारा वैसे भी 1-1.5 मिनट की वीडियो रह गई है। तो ये ग्लासेस की बात, ये मिरर की बात करो। इसके जो मिरर है इसमें जो है लाइट पास ऑन नहीं होती, इसमें से जो है लाइट पास हो जाती है, ठीक है। लाइक लेज़र लाइट आप टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग मैंने की थी, तो इसमें से जो थी पास नहीं हुई थी, इस वाली में से जो थी पास हो गई थी। तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। फार आई साइड है तो इसलिए दोनों ही ठीक हैं। एक मेरे ख्याल से पास की, एक दूर की, इस तरह का कुछ सीन है, सॉरी। तो यार ये व्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट व्लॉग्स के लिए, ठीक है। ये काम आप लोगों ने जो है लाजमी करना है। बाकी चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखो अपना, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते हुए रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन पर क्लिक करो। अगली वीडियो जो अभी आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लोगों ने नोटिफिकेशन से देख लिया करनी है वीडियो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।